Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Noman Sher, your English instructor, once again with all of you people. And hope you all are well. My dear student, today I'm going to talk about rule number 6, and the topic is until and unless. My dear student, in this lecture, I'm just going to talk about until and unless. And tomorrow, I'm going to teach you about if and whether. Because in this video it could be lengthy, therefore I will try to teach you in the rule number 6 into two videos. Okay, my dear students, so let's get started. As I told you from rule number 1 that first we need to see on the basis of parts of speech. First of all, I want to tell you about until, then after unless on the basis of parts of speech. Okay, until until it acts as a conjunction as well as a preposition in a sentence. Until it acts as conjunction in a sentence as well as a preposition. In the same way, unless it will always act as conjunction only. Conjunction only, okay? Another point, until is about time. Until is about time means to say whenever we are talking about time, at that time we have to use until it focuses on time. जब वो किसी वक्त की उतना बात हम लोग करते हैं तो उस वक्त हम लोग until यूज करेंगे. On the other hand, unless it focuses on condition, unless it only focuses on condition, until it focuses on time, and unless it focuses on condition. Whenever we are talking in a sentence about any condition, about any situation, at that time we have to use unless. जब सेंटेंस में टाइम का जिक्र हो रहा था होता है ना, तो उस वक्त हम लोग until यूज करेंगे. अगर किसी सिचुएशन की, किसी कंडीशन की, किसी इवेंट की बात हो रही है तो उस वक्त हम लोग unless यूज करेंगे. Let me tell you the Urdu meaning of until and unless. It could be easy for you to understand these words, okay? Until, if I tell you the meaning of until in Urdu, इसका मतलब होता है उर्दू में जब जब तक या उस वक्त तक. ये until का मतलब है जब तक, उस वक्त तक. देखो इधर वक्त आ रहा है, मैंने आप लोगों को बताया कि it's about time, it focuses on about time. ये we are just talking about time. Whenever we are talking about time, at that time we have to use what? Until. So इसका उर्दू मीनिंग भी यही है, उस वक्त तक, वक्त टाइम, जब तक. अब जब बताऊं, फॉर एग्जांपल, मैं you will wait until I will come. You will wait until I will come. आपको इंतजार करना होगा जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं ना आऊं. ये क्या, ये until हो गया. On the other hand, unless, if I tell you the meaning of unless, it gives the meaning अगर नहीं. In English, if not, अगर नहीं. until का मतलब उस वक्त तक या जब तक. unless का मतलब अगर नहीं, या इंग्लिश में कैसे if प्लस not, तो ये क्या is equal to unless. Let me tell you an interesting point you could be kept in your mind कि until और unless के साथ जब ये एक क्लास हो गया, यानी हम लोगों ने until और unless एक क्लास के साथ यूज की, तो उस वक्त हम लोग not we will never use, because until and unless it itself gives the meaning of negative sense. ये खुद नेगेटिव मीनिंग देती है, तो इनके साथ हम लोग नॉट वी विल नेवर यूज, हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे. तो मैंने क्या कहा? नॉट
ये नहीं हम लोग यूज नहीं करेंगे किसके साथ, until के साथ. इन द सेम वे नॉट इसके साथ भी हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि आई टोल्ड यू अनलेस इटसेल्फ गिव्स द मीनिंग ऑफ नेगेटिव सेंस. अगर ये खुद नेगेटिव सेंस दे रहे तो नॉट की नोट नहीं लगाएंगे ना. I hope that you got it. Let me tell you this sentence. Okay, first one. I've written that I will wait unless, yeah, until he comes. Now, in this sentence, I'm talking about time, and I told you whenever we are talking about time, at that time we have to use what? Until. So, in this sentence, until is correct. We don't have to use unless because unless is used whenever we are talking about condition, about situation. At that time, we have to use unless. But in this times, wait, मैं इंतजार करूंगा जब तक वो ना आए. जब तक वो ना आए मैं इंतजार करूंगा उस वक्त तक कि वो ना आए. तो अगर टाइम की बात हो रही तो हम लोग until लगाएंगे. अगर किसी कंडीशन की बात हो रही तो हम लोग unless लगाएंगे. आई होप दैट यू गॉट इट. और लेट मी टेल यू, मैंने इधर कहा कि मैं ना अनलेस और अनटिल के साथ नॉट यूज नहीं करूँ. क्यों, वजह क्या है ना, देखो मैं कहूँ आई विल नॉट, अगर इफ आई मेक द सेंटेंस आई विल नॉट वेट until he comes, ये until itself ये नेगेटिव सेंस दे रहा है. तो इसके साथ हम लोग आई विल नॉट वेट, सॉरी आप until he doesn't come, ये भी आप कह सकते कि भाई ये फॉर एग्जांपल he doesn't कम, ये एक until और इसके साथ मैंने क्लास यूज की है तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट ग्रामेटिकल है क्योंकि मैंने कहा था कि until ये इटसेल्फ खुद देता है नेगेटिव सेंस. तो ये सेंटेंस आई विल वेट until he comes, जब तक ये भी नेगेटिव सेंस है, जब तक वो ना आए. तो ये he does not नहीं आएगा, he comes only. Okay, in the same way until या unless he works he will not succeed. तो देखो ई वर्क्स, ये सेंटेंस में गौर करूं, मैं इधर ना टाइम की बात करूं ना कि मैं एक कंडीशन की बात करूं, एक सिचुएशन की बात करूं. तो उस वक्त whenever we are talking about condition or any situation, so at that time we have to use what? Unless. Okay, so in this sentence unless is correct. Instead of until we have to use unless. Okay, in this sentence, so this sentence will be unless he works he will not succeed. जब अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कामयाब नहीं होगे. अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कामयाब नहीं. इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट बी सक्सीड. देखो इफ नॉट आ रहे नहीं, मैंने कहा इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस. तो इसके साथ हम लोग क्या नेगेटिव नहीं लगाएंगे. तो अगर हम लोग नेगेटिव लगाए, फॉर एग्जांपल अनलेस ही डज नॉट, अगर मैं कह अनलेस ही डज नॉट he work as को मिटाऊं, he unless he does not work he will not succeed. ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि unless itself नेगेटिव सेंस देता है. तो instead of not we don't have to use not in our sentence. Okay, then after we our sentence it will be accurate grammatically. My dear student, this is overall about until and unless. So tomorrow I'm gonna teach you about if and whether. Okay, I hope that you have got everything. So in conclusion, I'm just gonna tell you, don't forget to subscribe my channel. You should subscribe my channel. I will be grateful to you. See you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.